Hello everyone, welcome to our YouTube channel Banana Academy। लेटेक ट्यूटोरियल सीरीज के आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि विद द यूज ऑफ लेटेक हाउ कैन यू प्रिपेयर अ प्रेजेंटेशन स्लाइड। जैसे आप माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशंस क्रिएट करते हैं, वैसे आप लेटेक का यूज करके भी प्रेजेंटेशंस बना सकते हैं। मैंने आपको अपने पिछले कई ट्यूटोरियल्स में ये समझाया है कि वाई लेटेक इज बेटर फॉर टेक्निकल राइटिंग, तो मैं आज ये डिस्कस नहीं करने वाला हूँ। आप मेरे पुराने वीडियोस देख सकते हैं, बट मैं ये ज़रूर बताऊंगा कि अगेन सेम थिंग कि अगर आपको प्रेजेंटेशंस बनाने हैं विद द यूज ऑफ लेटेक, तो यहाँ पे आपको लाइक माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट ये ज़्यादा फोकस जो है इस पे रहता है कि व्हाट इज़ द कंटेंट ऑफ योर प्रेजेंटेशन रेदर देन कि आपका प्रेजेंटेशन कहाँ पे कितने साइज का किस तरीके से दिखेगा। करेक्ट। डेफिनेटली आप यहाँ पे भी एनिमेशंस दे सकते हैं, आप फिगर्स इंसर्ट कर सकते हैं इन द सेम वे जैसे कि आप लेटेक डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करते समय फिगर इंसर्ट करते हैं। ओके, बट यहाँ मेन जो फोकस होता है वो होता है आपके कंटेंट पे, जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। तो हम शुरू करते हैं। मैं आपको दो तरीके से बता दूंगा कि कैसे आप इसको क्रिएट कर सकते हैं। पहला तो वे ये है कि आप विजार्ड में जाइए एंड क्विक बीमर प्रेजेंटेशन पे क्लिक करना है। अभी क्विक बीमर प्रेजेंटेशन पे जब आप क्लिक करते हैं तो आपके पास एक नया डायलॉग बॉक्स आता है। मैं इसको समझाने से पहले आपको ये बताना चाहूंगा कि बीमर is the class which is utilized for the purpose of creating presentation slides in your LaTeX document preparation system. Okay, तो आपको जैसे कि आप पिछले कुछ वीडियोस में देखे होंगे, मैंने आर्टिकल क्लास एंड डिफरेंट और भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लासेस की बात की थी। ओके, जैसे सिमिलर टू दैट आप यहाँ पे जब भी प्रेजेंटेशंस क्रिएट करेंगे तो उसके लिए आपको बीमर क्लास का यूज करना होगा। ठीक है। अब आप यहाँ पे थीम देख सकते हैं। जो आप आपको जो भी थीम आपके स्लाइड के लिए बेटर लगता है, आप उस थीम को सिलेक्ट कर सकते हैं। जो अभी आपको दिखाया जा रहा है राइट साइड में, दैट इज योर डिफॉल्ट थीम। ओके, और आप देख सकते हैं आपके पास जो टेम्पलेट है उसमें दो स्लाइड्स दिए हुए हैं कि आपका टाइटल स्लाइड कैसा दिखेगा और आपका रेस्ट ऑफ द स्लाइड्स जो है वो आपको कैसे बिहेव करेगा एंड हाउ इट विल बी शोन टू यू। आप थीम्स यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि आपके पास वेरियस काइंड्स ऑफ थीम्स हैं। ओके, आप देख सकते हैं a lot of themes are there. Okay, so whichever suits you, you just select that particular theme and then you may go ahead and do whatever you want to do. Okay, तो यहाँ बहुत सारे themes हैं जो आप यूज कर सकते हैं। ओके, मैं लेटर सपोज मैं ईस्ट लेंसिंग थीम का यूज करता हूँ। अगेन आपका जो टाइप फेस साइज है वो आपको जो भी सूटेबल लगता है आप यूज कर सकते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम 8 पॉइंट टू 20 point size. Okay, so I will select, let us suppose at this particular instant of time, 11 point system. Okay, encoding आपको select करना है तो कीजिए, otherwise by default whatever the encoding is you can keep it like that. In addition to that, you can write the name of the author. Okay, you can write the name of the author and what is the title of your slide. So my first dated presentation. If you want to select certain Babel packages, मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि Babel पैकेज क्या होते हैं। आप मेरे पैकेजेस वाले वीडियोस को देख सकते हैं Babel पैकेज के बारे में जानने के लिए। Okay, if you want to import some graphic X package, EMS package, you can select it. It will be automatically imported. At the same time, अगर आपको as and when required करना है तो मैंने आपको बताया था कि slash use package का यूज करके आप अपने जितने भी पैकेजेस हैं उनको इंपोर्ट कर सकते हैं। तो अभी हम लोग फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी वेरी सिंपल सेटिंग्स कॉन्फ़िगरेशंस करके लेट्स प्रेस ओके टू सी व्हाट हैपेंस ऑन योर editor. So now you can see that your document class with 11 point typeface of size and beamer class is ready to be utilized. Your use theme package, now you can see for your beamer you have to specify this line, that is your slash use theme.
एंड द थीम नेम। ओके, तो स्लैश यूज थीम आपको बेसिकली क्या प्रोवाइड करता है कि जो भी आप थीम यूज करना चाहते हैं उस थीम को आपको अवेलेबल कराता है। ओके, नाउ आपका डॉक्यूमेंट क्लास, डॉक्यूमेंट एनवायरनमेंट ओपन हुआ है, एंड देन योर ऑथर नेम, योर फर्स्ट LaTeX presentation as the title. You may also specify the subtitle. You may also specify the logo. Okay, the name of the institute. So let's compile it once, and then we will see what happens. Okay, so I'm going to compile it. Now you can see that your basic presentation slide is ready with you. Okay, now आपका presentation जब आप create करेंगे तो इस तरीके से आपको दिखेगा। अब मैं आपको कुछ और बातें बताना चाहूँगा जो कि आपको बहुत इट इज़ ऑफ यूज टू यू। ओके, सो अगर आपको कोई लोगो इंपोर्ट करना है तो आप क्या करेंगे, अपना जो डिपार्टमेंट का या कॉलेज का लोगो है या आपके इंस्टीट्यूट का लोगो है, आपके इंडस्ट्री का लोगो है, ओके, आपके ऑर्गेनाइजेशन का लोगो है, दैट यू कैन एंटर ओवर हियर। सो अगर आपको कोई लोगो एंटर करना है सो डेफिनेटली इट इज अ ग्राफिक, करेक्ट, इट इज एन इमेज। सो आपको मैंने पहले भी बताया है, उसके लिए आपको यहाँ पे use package and then which is the package graphic x, okay, that you have to import. So now आपने graphic x use कर लिया है, आप इसको uncomment करके and then you can write the slash include graphics, okay, and then you can include the image file name. Okay, so this is how you are going to import your logo. Okay, similarly what you can do is if you want some subtitle to be there in your presentation slide, so you can write like my first LaTeX presentation, and then in your subtitle you can write video tutorial. Let's compile and see what happens. आप देख सकते हैं आपके पास टाइटल के नीचे एक सबटाइटल आपके पास अवेलेबल है। सो एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, इट मे नॉट बी रिक्वायर्ड, इट मे बी रिक्वायर्ड। अगर आपको रिक्वायर्ड है तो आप उसका यूज कर सकते हैं। सिमिलरली आप अगर अपने इंस्टीट्यूट का नेम देना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं उस इंस्टीट्यूट का नेम, लाइक माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन। ओके, नाउ लेट्स कंपाइल एंड सी। आप देख सकते हैं मेरे इंस्टीट्यूट का नेम मेरे साथ नेम के नीचे में इट इज अवेलेबल, करेक्ट। सिमिलरली इफ यू वांट टू स्पेसिफाई द डेट, सो आई टोल्ड यू ना कि सी automatically date is there, okay, whenever you create the slides it will be available to you. If you want to specify in some another manner, so you can do that. Okay, so if it is automatically available you can specify, or you can leave it, or आप स्लैश बैक स्लैश डेट कमांड का यूज करके और आप डेट स्पेसिफाई कर सकते हैं। हो सकता है कि कई बार आप एक्सप्लिसिटली किसी एक पर्टिकुलर डेट पे प्रेजेंटेशन देना चाहते हैं 1 मंथ लेटर, तो आप प्रेजेंटेशन जो है बना के उसका डेट स्पेसिफाई करके रखना चाहते हैं, सो दैट लास्ट मिनट प्रॉब्लम्स ना हो। क्योंकि जो ये आपको डेट यहाँ पे दिख रहा है, दिस डेट इज योर द डे ऑन विच यू हैव कंपाइल्ड। इफ आई विल कंपाइल अगेन दिस पर्टिकुलर document tomorrow, so it will be shown to me as September to 2020. Okay, but if I will specify the date as, let us suppose, September to 2020 instead of September 1, 2020, let us compile and see what happens. So you can see that my date has changed. Okay, इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया है कि यहाँ पे आप सितंबर टू 2020 की जगह पे स्लैश टुडे भी लिख सकते हैं। ओके, सो स्लैश टुडे का क्या मतलब होता है कि जिस डेट पे आपने कंपाइल किया है वो डेट आपको मिल जाएगा। फाइन, इसके बाद आप सब्जेक्ट स्पेसिफाई कर सकते हैं यहाँ पे। तो हो सकता है आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड इस प्रेजेंटेशन को क्रिएट कर रहे हैं, तो आप सब्जेक्ट स्पेसिफाई कर सकते हैं। जैसे कि मैं सब्जेक्ट स्पेसिफाई करता हूँ लेटेक्स डॉक्यूमेंट preparation system. Let's compile and see. Okay, so this subject will be available at the time of your means it is when somebody is going to edit it and all. Okay, so it will be available and it will be shown, like आप देख सकते हैं आपका यहाँ पे subject यहाँ पे
शोन है। तो क्या होता है कि जब आप स्लाइड बनता है तो इट्स वेरी मच यूजफुल फॉर द पीपल हु आर व्यूइंग योर स्लाइड्स व्हेन यू आर डिलीवरिंग द लेक्चर और सम टॉक्स, कि भाई ये पर्टिकुलर किस सब्जेक्ट से रिलेटेड ये प्रेजेंटेशन बनाया गया है। तो आप देख सकते हैं देर आर थ्री columns. So first column में my name and my organization or institute is given. In second column, what is the subject on which this particular talk is going to happen, and in the third column the today's date is there, and you can see the number of slides also. So आप यहाँ देख सकते हैं ना, यहाँ पे आपको अपने प्रेजेंटेशंस में एक्सप्लिसिटली पेज नंबरिंग करने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो है एक्सप्लिसिटली कहाँ डेट आना चाहिए, फिर उस डेट को ड्रैग करना, ड्रॉप करना, दोज थिंग्स यू नीड नॉट डू, जस्ट राइट द कमांड्स एंड इट इज अवेलेबल टू यू. So your basic concern will be to identify and work upon the main content on which you are going to give the talk and you are going to create this presentation. Okay, so everything is available. As and when you are creating the new slides, your new page numbers will be automatically shown, as was in the case of your um, um, documents were you were creating in the previous lectures. Okay, now अभी यहाँ पे मुझे आपको बताना है कि जब भी आप टाइटल पेज बनाते हैं तो उसके लिए मैंने आपको पहले भी बता चुका है कि आप मेक टाइटल कमांड लिखते ही हैं, बैक स्लैश मेक टाइटल। सो उससे क्या फायदा होता है कि उसको लेटेक को ये पता चलता है कि यू आर ट्राइंग टू create a title slide. Okay, now a keyword is there that we need to understand over here, कि जब भी आपको एक नया स्लाइड क्रिएट करना है, सो देयर यू नीड हियर देयर इन केस ऑफ योर माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट we always call it a slide. Here in case of LaTeX Beamer, we call it a frame. So जब भी आपको एक नया स्लाइड क्रिएट करना है तो मैं उसको कहूंगा कि you are creating a new frame. So उसके लिए आपको फ्रेम एनवायरनमेंट के अंदर ही अपने सारे कंटेंट्स लिखने हैं। तो आप देख सकते हैं आपके पास अभी फिलहाल कितना फ्रेम एनवायरनमेंट है, दो फ्रेम एनवायरनमेंट है। तो फर्स्ट इज फॉर योर टाइटल, सो टाइटल पेज आपका जो है ये एक पहला स्लाइड है, and second frame environment is for your second slide or second frame what you can see over here, that is your second page of the presentation. Okay, now जब भी आप फ्रेम एनवायरनमेंट स्टार्ट करते हैं तो उसमें सबसे पहला क्या आएगा कि व्हाट इज द टाइटल ऑफ दिस पर्टिकुलर स्लाइड और फ्रेम। ठीक है, तो उसके लिए आपके पास जो कमांड होता है दैट इज कॉल्ड स्लैश फ्रेम टाइटल। ओके, अब यहाँ पे आप अपना स्लाइड या फ्रेम का टाइटल दे सकते हैं, एंड लेट्स कंपाइल टू सी व्हाट हैपेंस। So on compilation you can see that introduction is the title of my this particular page. Okay, your second page of the presentation. Okay, now if you are going to write something, it is same as what you were doing in your while creating the documents, correct? Same तरीके से आप यहाँ पे भी लिखते हैं, आप कुछ भी लिखेंगे so it will be shown like this is my first LaTeX presentation. So now you can see that if I compile this, it will be shown here. You can see here, correct? So it will be shown. आप इसको बना सकते हैं. But most important thing that I must tell you is that whenever you create slides, presentations, you do not write like documents, correct? You have to write in points so that whatever you are presenting, you can point wise tell it in a very crisp and clear way to your viewers or your listeners, correct? So उसके लिए same as what we did in our while creating our documents, मैं यहाँ पे lists create करूंगा. So you can create any kind of list ना, ordered or unordered. Okay, fine. So I will create an unordered kind of list with bullets. Okay, so for that I will write slash begin itemize. अगर आपको इसके बारे में जानना है कि itemize कैसे किया जाता है, okay, and what are the different enumerations, listing, so आप मेरे latest tutorial के listing एंड क्रिएटिंग द लिस्ट्स जो वीडियो है उसको देख सकते हैं। ओके, अब आप देख सकते हैं कि जब आपने नया आइटमाइज एनवायरनमेंट ओपन किया है तो स्लैश आइटम के साथ आप सेम थिंग लिख सकते हैं, दैट इज योर दिस इज माय
first LaTeX presentation. फाइन. नाउ आप देख सकते हैं कि आपका जो सेंटेंस है that is in bulleted format and this looks nice. Okay, and this is the way you should make presentation. You can create such kind of different uh, um, uh, lines also, like assume that x is the variable that is in phase y variable which, which denotes the location of a place. So I told you about math mode. You can use math mode as and when required. This is your inline math mode. Let's compile and see what happens. Okay. Now you can see that your slides are there, but sorry, your lines are there, but it is not justified. So for that, what we need to do is we need to include or import a new package. The name of that package is ragged tool. Okay. And whenever you are writing inside a particular itemized section or environment, you need to write slash justifying, backslash justifying. Now let's compile and see what happens. So now you can clearly view that as compared to previous compilation, previously what was the state, here you can see that your line is very well justified in your whole presentation frame. Okay, so this is how you do the justification of your lines. Fine. Now similar to what we understood ki bhai, there are, if there are a lot of points that you need to write, sub points that you need to write, okay, so you can very well create your uh, itemize environment and you can write same to that. Let us suppose if I write the location is important. So now if I compile it, I can see that I have a subpoint in my second point, correct? So you can create such kind of subpoints as and when required. Now one thing that I would like to tell you is कि, now you see that whenever you are creating the slides and your points in that particular slide, it is centered, correct? So normally what we follow is a 3/4 rule और a 2/3 rule. What does it say कि आपका जो स्लाइड है वो उसमें जो पॉइंट्स है वो ऊपर से स्टार्ट हो एंड जो नीचे के जो पोर्शन होते हैं एक पर्टिकुलर फ्रेम में और स्लाइड में, दैट शुड बी लेफ्ट एम्प्टी सो दैट जो पर्सन आपके बहुत पीछे बैठा हुआ है लिसनर, he also can be able to see that particular slide and the points written on it properly. तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ जब आपने स्लैश बिगिन फ्रेम यूज किया है वहां पे एक ऑप्शन देंगे T. So what T says that your point should start from the top. आप देख सकते हैं आपका पॉइंट जो है वो टॉप से स्टार्ट हो गया है. अब एक कई बार ऐसा होता है कि a lot of presenters they want the points in the slides to come one by one, correct? तो उसके लिए आपको क्या है, एक ऑप्शन यूज होता है, that option is called slash pause. ओके, तो आप हर लाइन के बाद स्लैश पॉज का यूज कर सकते हैं. ओके, इससे क्या होगा कि आपके जो स्टेटमेंट्स हैं, लाइंस हैं, वो वन बाय वन आएंगे. लेट्स कंपाइल एंड सी व्हाट हैपेंस. ओके, सो आप देख सकते हैं कि आपका जो पहला पॉइंट है दैट इज ओनली शोन. ओके, सेकंड इज ट्रांसपेरेंट. ओके, नाउ इफ आई वांट टू सी द नेक्स्ट लाइन, सो आप देख सकते हैं आपका नेक्स्ट लाइन create okay and it is shown. Then if you want to show the third line, then you can see the third line is visible. Fine. अभी यहाँ पे क्या हो रहा है basically that your first line is visible and second line is transparent, correct? So ये क्यों हुआ है? Because I have written that I want the beamer to be covered as transparent. Okay, अगर मैं इसको डिसेबल कर देता हूँ और कमेंट कर देता हूँ, now let's compile and see what happens. Okay, so now you can see that even my next few lines are not shown.
Okay, so whichever you want, you can do that. Now, if you go and change your slides, you can see that your different points are getting shown one by one as and when required. Okay, so this is how you create Beamer slides. Now, this is the very basic thing with which I wanted to tell you कि कैसे आप presentation slides create कर सकते हैं. अब इसके बाद क्या है, whatever you did while understanding, listening, and practicing your document creation, all those things can be imported like figures, tables, okay, algorithms, fine, all types of formatting of the documents. You can do all those things, correct? Just why this beamer becomes very difficult, because इसकी जो settings करनी है, that becomes very difficult for the initial learners. ठीक है, तो मैंने आपको क्या है कि एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दिया है, जिससे आप ये समझ जाएंगे कि ठीक है, आपको अगर बीमर क्लास स्टार्ट करना है तो आपको क्या क्या चीजें आनी चाहिए. ओके, तो मैंने आपको बता दिया है टू जस्ट ब्रीफ यू कि आपको बीमर क्लास का यूज करना है, आपको एक थीम सेलेक्ट करना है, एंड देन आपको ऑथर टाइटल, ओके, डेट, सब्जेक्ट, इंस्टीट्यूट नेम, सब टाइटल इफ रिक्वायर्ड, एंड देन यू स्टार्ट योर creation of slides, or it is called in terms of LaTeX as frames, by beginning your frame environment, and whatever you write in the same slide means whatever content you write between the within the frame environment, it will be shown to you as a slide. Okay, now आपको एक और बात बता देता हूँ कि अगर आपको सेम एक दूसरा स्लाइड बनाना है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आप एक नया फ्रेम ले लीजिए. ओके, जस्ट फॉर द सेक टू लेट यू अंडरस्टैंड हाउ द डिफरेंट फ्रेम्स आर क्रिएटेड, मैं आपको दो डिफरेंट फ्रेम्स बना के दिखा रहा हूँ. ओके, लेट्स कंपाइल एंड सी व्हाट हैपेंस. आप देख सकते हैं मेरे पास पहला फ्रेम टाइटल स्लाइड है, सेकेंड फ्रेम इज देयर, एंड देन आई हैव कॉपीड माई थर्ड फ्रेम. तो आप देख सकते हैं कि मेरा थर्ड फ्रेम विजिबल है. ओके, सो जितने आप पॉजेस करते हैं उतने आपके फ्रेम्स बढ़ते हैं. ओके, बिकॉज ऑफ द लाइंस दैट यू आर क्रिएटिंग ऑन डिफरेंट फ्रेम्स, इट सेज लाइक दैट. सो अगर मैंने पॉज हटा के अब आपको मैं दिखा सकता हूँ कि आपके जो three different frames that are ready in front of you. Okay, so now what I would advise you is that it's always good to take up this tutorial as a starting point, and then you go ahead and try to create your own LaTeX presentation slides or frames, so that it will be very much useful for you if you practice it at your own time. Okay, so till then, I will come with more LaTeX tutorials. I would like to say goodbye to you. Thank you very much.